The اهليت الاداء, same as اهليت الاداء, it is also divided into two. Complete capacity to execute and deficient capacity to execute. اهليت الاداء كاملة and اهليت الاداء ناقصة. So these are two types of this اهلية, complete and the deficient. Now how we can differentiate between اهليت الاداء كاملة and ناقصة? In كاملة, here, because as we discussed in the previous, as we discussed at the beginning, that اهلیت ادا is about the performing, ادائیگی کی بات چل رہی ہوتی ہے, how to perform. Direct performance, direct performance is discussed under اهلیت الاداء. It means that if a person possesses اهلیت الاداء كاملة, he himself will perform his duties. He himself will get his rights directly. So this is the direct performance in اهلیت الاداء. But in اهلیت الاداء ناقصة, in the deficient way, the person is not eligible to perform his duties or his actions directly. So that is, then he perform his duties indirectly through delegated authority. So here the performance is through delegated authority. So this is the difference between اهليت الاداء كاملة and اهليت الاداء ناقصة. So if we count the capacities, there are 4 types of capacities. You can say for mukallaf. So mukallaf possess اهليت الوجوب كاملة, اهليت الوجوب ناقصة, اهليت الاداء كاملة and اهليت الاداء ناقصة. So these are the types of capacities. So now let's move forward and we will discuss that the jurists, how they divided these, distributed and fixed these capacities upon mukallaf. Now jurists disperse the capacities, the different types of capacities. We saw that اهليت الاداء كاملة, اهليت الاداء ناقصة, اهليت الوجوب كاملة, اهليت الوجوب ناقصة. So these 4 types, the jurists disperse these capacities on mukallaf according to his life cycle. ادوار حیات, उसकी जिंदगी के मुख्तलिफ अदवार पे उसको तकसीम किया गया है. Now the first stage of human life is dawrul janeen, the fetus stage, when human being is pre-born stage of the human being. According to the jurist, when a person in the womb of his mother, and Allah Almighty says that, the jurist says that, the medical also says that the human being is considered a separate entity, human, in the womb of his or her mother. When the spirit enters in his body in the womb of his mother, then this is called dawrul janeen. So at this stage, the jurist says that that person, entity, is called janeen. That human being is named as janeen, fetus, and that janeen possesses
deficient capacity for acquisition. It means at this stage, the human being who is in the womb of his or her mother possess deficient capacity for acquisition, اهليت الاداء ناقصة. When we call that there is اهليت الاداء ناقصة for the person who is in the womb of his or her mother, then it means that there are some rights for that entity, that human in the womb of even his or her mother. For example, a person died and he left his wife with his child in her womb. Now the question is whether that child who is in the womb of his wife will get inheritance in his father or not. So that is under the light of this capacity, اهليت الوجوب كاملة, jurist decides that that child will get share in the inheritance of his or her father, because there is a right and that is established for that child under the heading of اهليت الوجوب ناقصة. So ये फुकहा ने ये इसलिए शरीयत ने उस बच्चे के लिए ये अहलियत वजूब नाकिसा फिक्स कर दी. अगर अहलियत वजूब नाकिसा भी उसके लिए डिटरमिन न की जाती तो फिर उस बच्चे का कोई हक भी नहीं था. फिर क्वाइट पॉसिबल था कि कोई भी इस काम में अमल कर दे, कोई भी उस बच्चे को माँ के पेट में भी हो, 6 मंथ में हो, 7th मंथ में हो, कोई भी उस बच्चे को उसकी पैदाइश से पहले ज़ाय कर दे तो उसका कोई हक भी ना होता. तो ये बुनियादी तौर पर अल्लाह जल्ला मशरूह की इंसान के ऊपर रहमत का एक सबूत है कि अल्लाह इंसान पर कितना करीम और रहीम है कि वो इंसान को उसकी माँ के पेट के अंदर के हुकूक भी उसके लिए दे रहा है. इसलिए अब ये कमाल देखे शरीयत का कि इंसान के ऊपर रहमत का कि उसके लिए जिम्मेदारियां नहीं डाली और वजूब भी दी. तो कौन सी दी? उसके लिए अहलियत और वजूब नाकिसा दी, कामिला नहीं दी, क्योंकि इंसान अभी माँ के पेट में है. जिम्मेदारियां डाल दोगे तो अदा कैसे करेगा? इसलिए उसके लिए जिम्मेदारियां साबित नहीं हुई, लेकिन उसके लिए हुकूक साबित हो गए. So that is the reason Sharia says that the deficient capacity for acquisition. तो इस हेडिंग के तहत उस इंसान के कुछ न कुछ हुकूक होते हैं. इसी वजह से शरीयत कहती है और कभी मेडिकल ये कहते हैं कि 80 दिन से पहले या गालिबन कोई दिनों का फिक्स कॉल है, उससे पहले जो इंसान माँ के पेट में होता है तो उसके अंदर रूह फूंक दी जाती है और वो एक इंसान बन जाता है. और फिर उसके बाद उसका इसकात जो है अल्लाह ताला की बारगाह के अंदर वो कत्ल शुमार होता है. इसलिए कुरान मजीद ने जो इसकात हमल है, इस्लाम उसको नाजायज़ करार देता है क्योंकि वो एक इंसान का कत्ल है. तो इसलिए इंसान जो है, इस्लाम इंसानी हुकूक का सबसे बड़ा अलमबरदार है, ना कि महरम. तो ये दिस इज द केस ऑफ. But now, what is about the capacity to execute اهليت الاداء? Because that child is in the womb of mother, so he cannot perform anything, he or she cannot perform anything. So that is the reason Sharia says there is no اهليت الاداء, neither deficient nor complete. उसके लिए कोई अहलियत अदा नहीं होगी जब इंसान अभी माँ के पेट के अंदर होगा. तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ डेफिशिएंट कैपेसिटी होगी और कि वो सिर्फ अपने हुकूक हैं जो वो उसको हासिल कर